हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो यही वीडियो में प्लस थ्री फर्स्ट ईयर एनवायरमेंटल स्टडीज इकोसिस्टम को डिस्कसन करबा। इकोसिस्टम और व्हाट इज इकोसिस्टम एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो एथरा हम इकोसिस्टम रो एमसीक्यू मध्ये डिस्कसन करबा जे इकोसिस्टम टर्म कोन केमिति की तार फादर और इंडियन फादर की। नेक्स्ट व्हाट इज इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिबा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम माने इकोसिस्टम केते भाग कराई छि कोन कोन। तो ता सहित कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम ये सब हम डिस्कसन करबा। तो डिस्कसन करने पूर्व मुझे आपको किसी कहना चाहूँगी माने जो मानकर भेसटा उभय ओडिया मीडियम पिला वीडियो बन सारी। जब आप इंटरेस्ट अच्छा तो चैनल को देखिपारे आ इंग्लिश मीडियम पिला माने एनवायरमेंटल स्टडीज आगुरी अनेक लंग क्वेश्चन बन सारी। जदि आप चैनल को देखना चैनल को देखिपारे। चलो तो स्टार्ट करवा व्हाट इज इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फास्ट टाइम देखिए इकोसिस्टम पूर्व इकोसिस्टम ऊपर जानदेवा। इकोसिस्टम टर्म एज ट्रांसलेट माने एज ट्रांसलेट हो इकोसिस्टम टर्म माने फादर। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरैक्ट विथ द एनवायरनमेंट अराउंड देम। एंड इकोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर हैबिट्स। माने गोटे इकोलॉजिस्ट सब कौन स्टडी करे ना रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर हैबिट्स। फादर ऑफ इकोलॉजी इकोसिस्टम के एग्विन ओडन एग्विन ओडम। तो एग्विन ओडम इज फादर ऑफ द इकोलॉजी। और सेम देखिए कौन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रामदेव मिश्र। तो एमसीक्यू मध्य होगा। नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम माने कौन ना आन इकोसिस्टम इज ए जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स planets animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. Ecosystem contain biotic or living parts as well as abiotic factors or non-living parts. Next time देखिबा in other words an ecosystem is it is a community or ground of with the each other in a specific environment. तो इकोसिस्टम कौन आ गोटे कौन होची ना एनर्जी फ्लो होची। तो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम केमती होची ना एनर्जी फ्लो इज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू लिविंग थिंग्स विथिन an ecosystem. All living organism can be organized into producers and consumers, and those producers and consumer can further be organized into a food chain. Each of the level within the food chain is a trophic level. नेक्स्ट टाइम देखिए कौन ना देखिले इकोसिस्टम कौन था। इकोसिस्टम फादर किए आउ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किए इकोसिस्टम टर्म माने कौन है आसी। नेक्स्ट तो हम देखिए एनर्जी फ्लो देखिले। तो नेक्स्ट टाइम देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन हम देखिबा ना द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडेड कौन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम अच्छी कौन कौन ना टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन आछो नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम पूरी दी भाग भाग कराई कौन aquatic इकोसिस्टम terrestrial इकोसिस्टम। तो aquatic सिस्टम मध्य कौन दुई भाग अछि lentic और lotic। ये सब हम डिस्कशन करें। तो फास्ट टाइम देखिए कौन नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम माने कौन तो एगुड़ मध्य 3 मार्क्स आसपे कि 2 मार्क्स आसपे। नेचुरल इकोसिस्टम माने व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो हम देखिए नेचुरल इकोसिस्टम माने कौन ए नेचुरल इकोसिस्टम is a community of living and non-living entities and occurs freely in nature. Every component interacts together as a combined unit through physical, chemical and biological process. The natural ecosystem classified into two major that are aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem. तो नेक्स्ट देखो aquatic ecosystem माने कौन। तो aquatic इकोसिस्टम माने हम देखिबा an aquatic ecosystem is an ecosystem formed by surrounding a body of water in contrast to land-based terrestrial. Aquatic ecosystem contain communities of organisms that are development on the each other and other their environment. तो नेक्स्ट टाइम कौन देखिए द टू टाइप्स ऑफ aqua system aquatic इकोसिस्टम को मध्य कौन दुई भाग भाग कराई।
The two types of aquatic ecosystem are marine ecosystem and freshwater ecosystem. Freshwater ecosystem may be lentic or lotic. The lentic lotic मान कौन ना slowly moving water including pools, ponds and lakes आज कौन lentic ecosystem. तो lotic कौन ना fast moving water including streams and rivers. तो next हम देखिबा terrestrial ecosystem. तो terrestrial ecosystem माने कौन A terrestrial ecosystem is a land-based community of organism and the interaction of biotic and abiotic components in a given area. Examples of terrestrial ecosystem include the tundra, taigers, temperate deciduous forests, tropical rainforest, grasslands and deserts. Next time देखिए कौन artificial ecosystem. The artificial ecosystem माने कौन artificial ecosystem are human-made structures where biotic and abiotic components are made to interact with each other for survival. It is not self-sustaining and can persist without human help. Next examples of artificial ecosystems कौन artificial ecosystem example कौन include aquariums, agriculture fields, zoos, garden etc. तो ये है artificial ecosystem रो examples. Next time देखो components of ecosystem. तो ecosystem कौन components है biotic components, abiotic components. Every ecosystem has two components, namely biotic components and abiotic components. Biotic components refers to all living organisms in an ecology, while abiotically refers to the non-living things. Next time देखिए biotic components. तो biotic components माने कौन the biotic components of the ecosystems are living organisms that make up the ecosystem. Examples कौन हम biotic components रो example कौन planets, animals. Next time देखिए इत्यादि species. So next the biotic components can be further classified into two based on the energy requirement source at the कौन ना biotic components can be further classified. मतलब biotic components classified है into based कौन energy requirement source. Energy requirement source कौन biotic components को classified है कौन कौन ना जो energy flow होची producers, consumers and decomposers. तो एमान को द्वारा biotic components कौन energy flow requirement source अनुसार से कौन classified है. तो हमें देखिए प्रोड्यूसर्स माने कौन ना जो प्रोड्यूसर्स आपको बा ऑटोट्रॉफ्स प्लैनेट्स दैट कैन synthesize their output and energy requirements through hydrogen in the process of sometimes and Europe are referred to as the producers. convert carbon dioxide into carbon hydroxide. तो यही पर कौन कौन करुच्ची ना फोटोट्रॉफ्स कौन सन एनर्जी को यूज करके से कौन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. तो नेक्स्ट टाइम देखिए कौन ना जेनोट्रॉफ्स गेट देयर एनर्जी मोस्टली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर inorganic compounds which they get at a process known as chemosynthesis. तो नेक्स्ट कौन देखिए कंज्यूमर. तो कंज्यूम बा हेटोट्रॉफ्स कौन कहते ना है कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दे ईट फूड दैट द प्रोड्यूसर्स हैव प्रिपेयर्ड मैंने प्रोड्यूसर जहाँ फूड प्रिपेयर करछि कंज्यूमर ता कौन करछि ना ईट करछि. सिंपल inorganic substances cannot be used to prepare food by consist they shall under one of the following categories. नेक्स्ट टाइम देखिए कौन ना कंज्यूमर को मध्य कौन कैटेगरी है कितने फॉलोइंग कैटेगरीज अछि कौन कौन अछि
ना प्राइमरी कंज्यूमर्स बा हर्बिवर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बा कार्निवर्स, टेरिटरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, टॉप कार्निवर्स। तो फास्ट टाइम देखा कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये 2 मार्क्स किंबा 3 मार्क्स आसीपारे। तो देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स माने कौन, these specifies area the species are known as herbivores since they only eat plants. Primary consumers such as cows, goats, deer, rabbits and other are directly elephant on the planets. They are part of the food chain second trophic level. Next है कौन secondary consumers। secondary consumers कौन, these specifics are known as carnivorous। यह कौन carnivorous जॉन्स they eat primary consumers and are found at the third trophic level of the food chain. Foxes, dogs, cats and other animals are examples। मान कौन secondary consumers रो एमान सब examples। नेक्स्ट हम देखिया कौन ना territorial consumers माने कौन, territory consumers are animals that eat carnivores in the food chain. It is needed in a territory trophic level. Good example is a wolf that eats a fox. Quaternary consumers कौन ना quaternary consumers कौन, they are animals that are capable of killing territory consumers like lions, tigers, vultures and other predators। नेक्स्ट हम कौन देखिबा ना टॉप कार्निवर्स। टॉप कार्निवर्स कौन, टॉप कार्निवर्स इज अनदर नेम ऑफ देम, दे आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। तो नेक्स्ट हम देखो डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बा saprotrophs बा micro consumers। Decomposers also known as saprophytes and micro consumers are fungi and bacteria that decompose organic matter. They eat dead plants and animals and use a variety of chemical reaction to convert them into nitrogen and carbon dioxide। तो नेक्स्ट कौन कौन ना saprophytes are an important part of the ecosystem because they recycle nutrients that can then be utilized by producers who are planted to generate their own energy। तो नेक्स्ट हम देखिए ना abiotic components। abiotic components of ecosystem। An abiotic factor is a non-living part of an ecosystem that shapes like its environment। abiotic components are classified into 3 categories। कौन कौन classified है, inorganic component, organic component, climate and edaphic factor। तो कौन देखिए inorganic component, it is also consist of inorganic substance like water, carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus। The quantity of those inorganic substance processed in an ecosystem is named because the standing state or standing quality। नेक्स्ट टाइम कौन देखिबा organic components। organic components माने कौन, the organic components of an ecosystem are proteins, carbohydrates, lipids and amino acids, all of which are synthesized by the biota of an ecosystem and are reached the ecosystem as their weights did remains at। नेक्स्ट टाइम कौन देखिए ना climate and edaphic factor। climate factor are the factor that affect the climate। They include mean temperature, humidity of the air pressures, sunlight, etc। edaphic factors on the other factor hand are related to the structure and composition of the soil। They explain the chemical and physical components of the soil। तो यहीपर भाव कौन इकोसिस्टम आम डिस्कसन कलु इकोसिस्टम स्ट्रक्चर आउ जो केते भाग क्लासिफाइड होती कौन कौन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यही वीडियो पे अपन चैनल जोड़ी जातु और नोट्स को शेयर करूँ जहाँद्वारा कि समस्त नोट्स पहुँची पार आ समस्त पाठ पढ़ा साहय। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो।